Okay, so hopefully all of you have submitted your homeworks on assignment tab on LMS. If sometimes I forgot to create an assignment a tab on LMS, you can also upload on Dropbox and send me an email. But the assignment tab is there, so make sure to upload on time. This time and also in future, I will try to upload the solution over the weekend, and we'll try to share the grades also and early next week. Just to reiterate, the second homework will be on a similar stuff, but there you mainly have to do the simulation, verify your whatever the results using the cadence, and you need to comment what's the difference and why the difference it is. So since Tuesday you will get used to it, so I will share the next homework also by Monday or by Tuesday. So it will be just straightforward doing some simulation practice, so not more than that. Right. So I guess last time we talked about the DC analysis, and then we figured it out some small parameters from that DC analysis, which will be used for the AC analysis. So those two parameters which we found was GM and the R0, and we mentioned something like this, that if we have one NMOS where this is drain, this is source, this is gate, and there's a bulk body, and if I want to connect this bulk will be all the time connected to ground in case of NMOS. Right, and we said, okay, this is one of the model, and then first thing what we do, we all the time do the DC analysis to find out the biasing point to ensure that the transistor is in saturation or not. Once we know in which region it is, and then we apply accordingly those models to find out whatever is required. Is it we want to find current, we want to find voltage, we want to find amplification, whatever. But before moving forward, we need to know what region, and the DC analysis tells us the region based on those condition, and then we do the AC analysis, or we draw the model. Okay, so AC analysis wale ko hum log normally or roughly we call it as a small signal analysis. Okay, can anyone tell me why we call it as a small signal analysis? Because because the applied AC signal is very small. Yeah, so because we go to the DC point, we find the point where we want to amplify, and then we do very small variation, as Abdul Rahman mentioned. So because of that very much small variation, where we assume the system will behave linearly, that's why we call it small signal analysis. And also when we model something, means, or we might be, as humans are more computationally strong as compared to our computing machines. They cannot solve non-linear much problems. So that's why we want to give them a linear model so they can easily solve out those things. Okay, so इसलिए हम लोग as much as linear उसको दे देते हैं, and then it try to bring out. So for the AC one, so for the DC, what we normally find, we can mention, we find ID. So that we need to know the current. Then we find agar humne VGS kitni apply ki hui hai. We need to know the V threshold. We need to know the VDS, and we find the operating regions accordingly. Ye karne ke baad we saw that we can also find GM and we can find RO. GM ko find karne ke we saw multiple ways. So one of the ways was just taking the derivative of ID by VGS, and it comes out to be, we can directly write mu(n) COX W over L VGS minus VT. ठीक है, तो हम GM फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें VGS पता होगा. W by L is from the equation itself, and we also saw some different variants. हम different plugin करके we can also find out directly in the form of ID or directly in the form of a different variables we can find. And then we talked about R0. G. So yes, Jamshed, body effect impacts the V threshold. We will touch it today in a smaller time, because just last time we just said that there is something VSB, and we will touch it today, and then you are going to do the simulation
for in your next lecture. So the answer is yes, the body effect impacts the V threshold value. How it impacts, we can just rather we'll start from this point. So, and then we saw the AC analysis part. For the AC, we draw the small signal, and last time where we reached was just this thing. We saw we draw a GM, so AC, so we can only take an AC signal, and we also mentioned, okay, the nomenclature which we are going to follow, or which is somehow we can not that much strict, but at least this capital VGS means D and small gs means DC, small means AC, and combination of these two means AC plus DC. So here this means this is an AC signal, AC VGS, and then we saw this R0. Okay, and this is your drain, this is your source, and here we can have your VGS. ठीक है? अभी तक we didn't draw basically on this curve the body effect. ठीक है? अब body effect होता क्या है? Can anyone tell me what is the body effect? So we move from this and then we can do some examples and some numerical problem. Today we are going to understand with some example, and that might be a little more helpful. So coming to this question, what is body effect? Anybody want to add on? Sir, I think this happens when the negative supply is connected to the body instead of connecting to the substrate. So this creates basically a reverse bias between the source and the body, and this effect has a effect on the device operation and reduces the channel depth. So जो आप कह रहे हैं, you are saying so negative positive, if I give 0.5 volts here, this one is connected to ground. This is what you are saying? Yes. So all of you are clear that this is a body effect. So what we can write VSB is equal to 0.5 volts. Is it clear to everyone, or is this the correct way? So let's a little bit see more intuitively. First and the most important thing, I highly prefer, since we are a small group of the students, why not, whenever you have some query, you can ask, right? To make a classroom environment rather chat, it's difficult for me to follow up. Okay, then the interruption also sometimes the flow is going in a different way and you take the flow. So I highly appreciate if you can just talk, might be more better. So also I have some feeling that we are in a real class. Okay? But again, if you have some ask question in any case, so even if you want to write on chat, but again, preference is by talking. So in general, whatever is the mentioned this body effect, yes, it is correct. But in reality, we don't, even if you don't have a negative supply, because we want to avoid negative supply in IC design most of the time. ठीक है? Reason आहिस्ता आहिस्ता आपको एक दो examples के साथ भी idea हो जाएगा, but the main thing is that somehow similar we don't want to forward bias or bulk area, so we don't want to provide a negative supply. And negative supply हम करेंगे तो then we need to recreate or real layout, उसमें हमें जो आपके P well हैं, N wells हैं, वो separate out करने पड़ेंगे. Then the area is going to start becoming huge. But these things might be getting clear to you when we do some later stages layout and we talk these things. But at this moment, the conventional way is this one. We want to connect. Our supply is VDD and ground. ठीक है? So हमें या तो 0 volts है या मेरे पास एक higher potential VDD है. मेरे पास negative supply है ही नहीं. ठीक है? तो हम अपनी जिंदगी थोड़ी सी आसान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बॉडी इफेक्ट हो सकता है. कैसे? पहली चीज, जब मेरे पास सप्लाई वोल्टेज 0 है, दिस मींस body will be, in case of NMOS or bulk, will be connected all the time to ground. ठीक है? ये कहीं और कनेक्ट नहीं हो सकता. अगर ये कहीं और कनेक्ट होगा, जो some analogy, it can be forward bias and that's a disaster. ये ऐसे ही है कि आप लोग दो टर्मिनल्स को सप्लाई के शॉर्ट कर दें. ठीक है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव को शॉर्ट कर दें. So that is a something no.
आप कर ही नहीं सकते। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सारा बल्ब या न्यूट्रल से करंट फ्लो करेगा, जिस तरह you will die or whatever. So you can't imagine that thing. So that's never going to be done. So that's why bulb should be connected all the time to the lowest potential in case of NMOS. ये तो एक चीज हम लोगों ने अपने जहन में डाल लेनी, इसलिए मैं लोएस्ट पोटेंशियल कर रहा हूं कि अगर ग्राउंड से भी कम लोएस्ट पोटेंशियल है तो इट शुड बी कनेक्टेड टू दैट वन। सेकेंड चीज आ जाती है कि कन्वेंशनली अगर ये सिस्टम हो, जिसे हम, अगर आप लोगों को याद हो कॉमन सोर्स है, तो कॉमन सोर्स में क्या होगा, ये ग्राउंड होता है, यहाँ कोई इनपुट होती है, यहाँ कोई आउटपुट होता है, ऐसे ही होता है ना, यहाँ कोई रेजिस्टेंस हो जाती है। सो व्हाट वी डू, दिस मींस सोर्स ये है तो बल्ब तो है ही ग्राउंड पे, क्योंकि हमारे पास सप्लाई 0 है मिनिमम। सो दिस मींस VSB इज इक्वल टू 0। एग्रीड? सो VSB 0 है हमारे पास, ये अच्छी बात है, कोई बॉडी बायस नहीं है या बॉडी इफेक्ट नहीं है। मैं भी इसके इफेक्ट पे आता हूँ, लेकिन लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई दिस पॉइंट। लेकिन अगर आपके पास इस तरह हो, कॉमन सोर्स डीजनरेशन हो, फिर क्या होगा? अब क्या होगा? थिंक ओवर इट। नाउ वी कैन नॉट डू दिस थिंग, दिस इज नॉट पॉसिबल टू डू। व्हाई? क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो मेरा बल्ब ग्राउंड पे नहीं होगा, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, करंट ID फ्लो कर रहा है, and because of that there will be some potential. This node is not at ground anymore. ठीक है? Make sure this point is clear to you. This is not ground in this case, so I cannot do this thing. So in this way, जब भी मैं इस तरह का सर्किट ड्रॉ करूंगा, कॉमन सोर्स विद डीजनरेशन, या कोई आपके पास सिस्टम होगा, you are going to do this thing. ठीक है? So that is this thing. अब इस केस में क्या होगा, whenever I am going to connect my circuit this way, my VSB is not equal to 0. ठीक हो गया? हमारी VSB 0 नहीं है, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, that we need to know. करंट की इक्वेशन देखें, अगर हमारे पास सैचुरेशन में, या जो भी, लेट्स राइट द सैचुरेशन इक्वेशन, एज्यूम हम सैचुरेशन में हैं, again I'm ignoring lambda for time being. ठीक है? So now अगर हम इस इक्वेशन को देखें, what you can see, half mu and COX constant है, not going to be affected by the body biasing at all. जो भी फाउंड्री ने आपको प्रोवाइड कर दिया, जितनी थिकनेस रखी, it's there, you cannot change anything. What about width and length? as a designer आप चेंज कर रहे हैं, not going to be impacted by your body biasing. VGS आप पोटेंशियल दे रहे हैं गेट पे, and whatever is happening on the VGS, again you are not tweaking it anything, इसका भी body bias में कोई इफेक्ट नहीं होगा. So only thing which is left is V threshold. जिस तरह जमशेद ने कहा था, yes there is effect of V threshold on VSB. Effect क्या होता है? Let me just write and then we will see like physically how it's happening or intuitively what's happening. तो in general ये होता है, अगर मैं VSB को increase करूंगा, meaning source पे potential ज्यादा करूंगा, या इसको generally draw करना चाहें, जो आप सिमुलेट में, I want you to do the simulation to observe this. आपने सोर्स पे कोई सप्लाई लगा दी, 0.5 वोल्ट्स दे दिया, ये ग्राउंडेड ही रहेगा. So what's happening? VSB इंक्रीज हो रहा है. ठीक है? VSB कितना है? 0.5 वोल्ट्स, 0 से इंक्रीज कर गया. And because of this increase, what's going to happen now? Ultimately, your V threshold will go up. ठीक है? फिजिकली लेट्स टॉक इन अ मोमेंट. लेकिन एक चीज, VSB ज्यादा करने से, इन केस ऑफ NMOS, द V थ्रेशोल्ड विल गो अप. V थ्रेशोल्ड ज्यादा जाने का नुकसान है या फायदा है? How you want the VSB value? You want it to be a bigger or you want it to be a smaller value? Sir, small VTH value. VTH should be small. Anyone on the bigger side के उसको बड़ा होना चाहिए? Sir, it may vary depending on the application, maybe. Right. So for some application, we want larger value of V threshold. For some application, we want smaller value of V threshold. So it definitely depends upon the application which you are targeting. I will give a brief and then later on we can also discuss more
about this one. So पहली चीज ये होती है कि ये तो हमें समझ आ गई है कि VSB हमेशा 0 नहीं होता. VSB in circuit because of the circuit topology change होता है, हो सकता है, कंडीशन आती है which we are going to see some example जो आप हमेशा सॉल्व आउट करते हैं, लेकिन उसकी वेरिएशन थोड़ी होती है. दैट्स व्हाई हम अपने एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर भी कर देते हैं. बट इन रियलिटी जो आपका मॉडल होता है, चाहे वो LT स्पाइस है, केडेंस है, कहीं और भी सिमुलेशन एनवायरनमेंट होगी, दे आर कंसिडरिंग दैट इफेक्ट. तो वो मॉडल में उसको कंसिडर करते हैं. किस तरह करते हैं? लेट्स डू दिस वन. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक मॉस है, NMOS है, ठीक है, ये NMOS है. सो इसमें NMOS में आपके पास एक अदर ड्रेन होता है, एक अदर गेट होता है, सोर्स होता है, एंड देन यू हैव अ बॉडी. ठीक है, ऐसे ही होगा. सो ये आपके 4 टर्मिनल डिवाइस होगी. बॉडी को हम लोगों ने कह दिया इट शुड बी मिनिमम 1, सो ग्राउंड कर दिया. गेट पे आपने VGS अप्लाई की, ठीक है, सो यू अप्लाइड VGS हियर एंड VGS शुड बी ग्रेटर देन V थ्रेशोल्ड. ठीक है, तो हमें इतना अप्लाई करना है सो दैट द चैनल गेट्स इन्वर्टेड, या we apply a positive voltage here so the electron starts getting accumulated. ऐसे ही होगा. पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट की VG पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ सारे अट्रैक्ट होके आ जाएंगे. ठीक है, होल्स या रिपेल आउट हो जाएंगे, द वे यू वांट टू से. नाउ अगर यहाँ मेरे पास 0 ही पोटेंशियल होता, क्या होगा? it will need this much effort to form this inversion layer. ठीक है, V threshold तक पहुंचने के लिए या इन्वर्ट करने के लिए मुझे एक अमाउंट चाहिए, लेट्स से V threshold of 0.6 volts in case of source is connected to 0. अब आप क्या करें? You connect this source to another potential, to some positive value 0.5. आपने इसको 0.5 पे कनेक्ट किया इंस्टेड ऑफ 0. क्या होगा? ये जो, क्योंकि 0.5 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे स्टार्ट्स गेटिंग अट्रैक्टेड हियर. अगर पहले उस एरिया में, उस टब में जो एक लाइन बनी हुई थी, उस टब के एरिया में 1000 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 200 शायद उस पोटेंशियल की तरफ से डाइवर्ट होके वहां चलेगा. अगेन आई एम टॉकिंग a little bit layman terminology, but that's good for understanding. 200 इलेक्ट्रॉन्स वहां चले गए. ठीक है, जब 200 इलेक्ट्रॉन्स वहां चले गए तो अब यहाँ कितने रह गए? 800. अब 800 पे तो V थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा था. दिस मींस यहाँ से हमें ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी. और इन अदर वे वी कैन से दिस वैल्यू ऑफ V थ्रेशोल्ड जो पहले 0.6 थी वो अब ज्यादा हो गई है, दैट गोज टू 0.8. सो दैट वो जो लेयर थी वो उसी तरह की फॉर्म हो जाए, या चैनल एक फॉर्म हो जाए, सो दैट आफ्टर वी अप्लाई द वैल्यू ऑन द ड्रेन वी कैन हैव अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये चीज जहन आ गई. तो इसलिए VSB ज्यादा करने से अल्टीमेटली V threshold goes up, and how much it goes up, that totally depends upon the technology. You can do the simulation and you can verify. That's also I will give in the next homework, so you can verify this aspect. तो ये चीज क्लियर हो गई है बॉडी इफेक्ट की. सर ये आप एक बार रिपीट कर दें कि व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रॉन्स. Let me draw in the next page and I can. Assume ये आपके पास एक P well है. इस P well में ये आपका ड्रेन है, ये गेट है, ये सोर्स है एंड ये बल्क है. और इन जनरल क्या होता है कि ड्रेन कहीं भी कनेक्टेड हो, मैं इसको ये भी ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, बल्क इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया. दिस इज ड्रेन एंड दिस इज सोर्स. सोर्स अगर ग्राउंडेड है तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, वी अप्लाई सम पोटेंशियल VG लिख लेते हैं, and whenever this VG greater than V threshold, we say sufficient amount of electrons get attracted here. ठीक है, पॉजिटिव यहाँ वैल्यू अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये सबस्ट्रेट है, सेमीकंडक्टर है, तो the electrons get attracted, hole get repelled, electron get attracted. So to have this condition कि वो एक V threshold, एक चैनल इन्वर्टेड लेयर फॉर्म हो जाए, हम लोगों ने एक रफली वैसे ही कह दिया कि हमें 1000 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्विवेलेंट टू
0.6 volts. कि मैं 0.6 volt VGS apply करता हूं तो मुझे 1000 electrons मिल रहे थे when source was grounded. Well and good. So that's why we need effort of 0.6 that time. Now अगर मेरे पास ये source किसी potential पे connected हो, potential meaning ये 0.5 volts. मैं इसको ये खत्म कर देता हूँ. Now it's connected to a 0.5 volt source. ये कहाँ है? अब ये पॉजिटिव पे हो गया. So negative positive attract each other. So what will happen? These electrons, some of them will get attracted here. ठीक है, यहाँ पहले कितने थे? 1000, but because of this voltage being applied, so might be I'm just saying now 800 are left. So 800 electrons are not sufficient to form the channel. This means more potential need to be applied to from the VG side so that it again reaches back to 1000. वो 1000 पे आएगा तो V threshold condition change होगी. या in general we can say this means more potential need to be applied. वो potential कितना है? That is V threshold. So that's why I'm saying अगर मैं VG की value VGS या VG की value 0.8 apply करता हूँ, then again I get back to 1000 numbers. And वो 1000 करने के लिए how much then VG or V threshold I need is equal to 0.8 volts. So because of this VSB increase or because of this VSB a body effect, the V threshold goes higher. इसकी description you can also read again in your book, chapter 9 में आप पढ़ भी सकते हैं. They are talking about in a similar way, I guess. So but might be more in a technical way, but again it's good to read it, and then in the next one you can do some simulation to have observation regarding these things too. ठीक है, equation की form में हम देखना चाहें तो we can have a let me write it. I don't recall the exact expression now. If somebody have taken the VLSI course, वहाँ हम लोग इसको use करते हैं. So the expression somehow V threshold का इस तरह होता है अगर mathematically बात करें. Again, I'm not writing the exact because it's not in my mind at this moment. Like somehow the expression is like this one. Something is multiplied by VSB. यहाँ कुछ work function हो जाता है and somehow like this. तो उसमें ये होता है कि in general जो transistor या MOS का V threshold होता है वो equal to V threshold not like intrinsic. ठीक है, when VSB is 0. वो अगर 0.5 volts है plus VSB के साथ अगर कोई VSB का पोटेंशियल होगा तो बेस्ड ऑन दैट वर्क फंक्शन कितने एफर्ट रिक्वायर्ड है उसके साथ वो ऐड ऑन होके आ जाता है. ठीक है, ये मेरा ख्याल है आपकी एक्सप्रेशन आपके इस बुक में भी चैप्टर 6 में मेंशन है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक इनटू इट, बट बेसिकली दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स. So as the VSB goes high, the V threshold goes high. So that is a net conclusion we want to make intuitively. Again, but there is a mathematical expression which accumulates के वो कितना होता है, and that totally depend upon the technology, depend upon the thickness, depend upon हम लोग कौन सा process use कर रहे हैं. Clear है यहाँ तक? So now let's come back to our topic जो हम लोगों ने last time. So let me just do one simple example and then we can do one example which I would like to continue today's class. अगर कोई concern है तो you can ask now. Right. So अगर आपको ये question दिया जाए and you are asked some things and those things are to find R naught. Can we find the value of R naught? So if you are given this question where you have some potential here, and you are asked to find the value of R naught.
पहली चीज तो आ जाएगी कि यहाँ डीसी वैल्यू क्या है इस नोड पे, where I'm pointing नोड ए कह देते हैं, इसको नोड बी कह देते हैं। नोड ए पे डीसी वैल्यू क्या है? So 1.115. So 1.15 वोल्ट्स। नोड ए पे एसी वैल्यू क्या है? Sir, 0. So AC is 0। नोड बी पे एसी वैल्यू क्या है? Let's draw node B, let's draw here। So we have an AC value of 1 millivolt and DC value of 5 volts। ठीक है, so at this moment we are putting some numbers which are going to correspond here। ठीक है, so can you find R naught for me? How we can find R naught? What you need to find R naught first of all? हमें पता था ID, R sir. naught जो 1 over lambda ID। Can we find ID? Yes, sir. ठीक है, so we are given things and again उसके लिए पहली चीज हमें क्या करनी होगी, is it in saturation or no? अगर V threshold is 0.8 volts, ठीक है, VGS is 1.1, so yes, bigger than that, then VDS is 5 volts, greater than VGS minus V threshold, this means it's in saturation। So we can use this equation, VGS minus V threshold। ठीक है, so if we want to plug in mu and Cx को assume कर लें 120 last time हम लोगों ने किया था, or whichever so। VGS so it comes out to be something ID as if I am mistaken, please correct me. I guess it's something 29 micro, 29.7 micro for this value. So if I didn't do any mistake, so somehow we are getting this value if we just do. Let me double check. I guess I did some mistake. Yeah, so it's okay, it's 29 point something micro। So अब हमें पता है लैम्डा क्या होगा, हमें कौन लैम्डा बताएगा? Last time we mentioned about the lambda, the channel length modulation is going to be provided to you by the foundry। So normal case, so you can take, it's in almost in this range, but you can find exactly। So we just need to plug in and we can find out the value of R naught। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका फर्दर ऑन हो सकता है, we can do the simulation। आप सिमुलेशन कर लें या दो प्लॉट्स कर लें विद वेयरिंग दिस स्टफ। इसको अगर मैं यहाँ प्लॉट करूं करंट की इक्वेशन को, अगेन दिस इज कैन ओनली बी डन व्हेन यू हैव अ सिमुलेशन टूल इन योर हैंड एंड यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक 2 पॉइंट्स यहाँ एंड यहाँ, ठीक है, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट और वैल्यू ऑफ लैम्डा डायरेक्टली फ्रॉम दिस वन। बिकॉज आइडियली क्या होना चाहिए, या अगर हमारे पास कोई channel length modulation ना हो, it should go straight like this, but it will not go like this। So we can find the slope and the slope is equal to 1 over R naught। या वहां से हम ID plug back कर लें and we can easily find out lambda। So we can also do this thing in the simulation। So ये भी आपका next homework में you will observe this thing, और next बल्कि class में ना we can try to do this sort of play and you can map the values के वो कितनी close हैं या कितनी close नहीं है। And also we can see directly the values of your lambda from the process parameters for certain foundry। वो भी we can do that in the next lecture। कोई इसमें concern हो before we move towards the next proper example?
ठीक है, so let's move. So this is basically example 9.5 from your book. It's an intuitive example. It's a covering a lot of aspects. So I would like also you do yourself one time in your home and try to understand the things. So I will draw the circuit and then we can discuss it. And again, it's better at the moment if you can also open your paper and pencil and start doing the thing with me. So catch a mistake on my side or try have more better version. Because most likely next time we will finish this modeling and then we are not going to touch the basic things. We will a little bit go with a more speed. क्योंकि अभी तो हम लोग थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं इसी वजह से. This one is की width और length है, ठीक है. जमशेद आप बताइए सारे NMOS हैं या PMOS हैं? What is your call? Sir, I think they're NMOS. M3 and M4 को देखते हैं जरा दोबारा से. M3, Why M3 and M4 और NMOS? sir, M3 because हमने diode connected जिस तरह से हमने किया है तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप PMOS को डायोड कनेक्टेड नहीं बना सकते? सर उसका लेकिन जो कनेक्शन जो हम सिंबल यूज करते हैं नहीं. इसमें So there are different ways. इसलिए just don't get confused with the notation. The common notations for NMOS are as follows. Let me just so you don't get confused. ठीक है. Similarly for PMOS, तो जब भी आपके पास ये बबल बना होगा, ठीक है, हाँ, इन्वर्टेड साइन ऑल द टाइम, दिस मीन्स अ PMOS, ठीक है. इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होती like arrows के केस में. So this is there is no second thought whenever there is a bubble here. The bubble basically shows that the PMOS, क्योंकि ये digital terminology में basically use होता है, but also in the analog, in order to represent, we do the same thing. So bubble means that PMOS works opposite to NMOS, meaning अगर मैं यहाँ 0 volt supply करूँ तो ये on होता है, 1 volt करूँ तो off होता है. So bubble inversion way as compared to NMOS just standard process. So bubble all the time represent PMOS. तो M3 and M4 जो है ये आपके पास PMOS है and M1 and M2 are NMOS. Clear है ये चीज? चलो. So ये अगर आपके पास एक अदर सर्किट है which is given to you and ये अगर बल्क है तो बल्क को कहाँ कनेक्ट करूं? ये अगर बल्क है इसके बल्क को ग्राउंड, इसके बल्क को ग्राउंड, तो यहाँ बॉडी इफेक्ट होगा या नहीं होगा? So yes, there will be body effect here because कि आपके पास जो बल्क्स हैं वो दोनों ग्राउंडेड हैं NMOS के, लेकिन जो सोर्सेज हैं they are not
ग्राउंड, ये टर्मिनल आपके पास डीसी ग्राउंड नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट डीसी ग्राउंड। तो ये ग्राउंड नहीं है तो इसका मतलब है देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ वीएसबी, जिसकी वजह से देयर विल बी बॉडी इफेक्ट। बट अगेन इन न्यूमेरिकल दिस कैलकुलेशन वी विल पुट इन आवर माइंड कि हमारे पास जो मॉडल एक्चुअल मॉडल से वेरिएशन आएगी, दैट इज बिकॉज ऑफ वीएसबी। हमें अपने जहन में रखना है, डिजाइन करते हुए भी रखना है, बट अगेन अगर मैं उसको प्लग इन अपनी सिंपल कैलकुलेशन में करना स्टार्ट कर दूं, देन आई विल जस्ट ओनली डू दिस मैथमेटिक्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। सो वी नीड टू कीप इनटू कंसीडरेशन देयर विल बी सम वेरिएशन, बट जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन कि हमें उसको डिजाइन में जहन में रखना है टॉलरेंस के तौर पे। सो नाउ अगर हम इस सर्किट को एनालाइज करना चाहें, मीनिंग वी वांट टू फाइंड द एसी करंट, वी वांट टू फाइंड द जीएम, वी वांट टू फाइंड हर एक का जीएम हो, एक एसी मॉडल बने, तो हाउ वी शुड प्रोसीड? सो द फर्स्ट एंड द मेन थिंग वी शुड स्टार्ट विद द डीसी एनालिसिस। तो हमें डीसी वैल्यूज चाहिए होंगी कि व्हाट आर द डीसी बायसिंग वैल्यूज। पहले करते हैं डीसी एनालिसिस सर्किट का, फाइंड ऑल दोस पोटेंशियल्स, ठीक है। This one is yes, ठीक। सो पहले आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद M1, बट अगेन आई नीड इनपुट फ्रॉम योर साइड बिकॉज अदरवाइज वी विल हैव डिफिकल्टी। अगर आप लोग अभी फॉलो अप नहीं करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम मॉडलिंग से आगे निकल आएंगे, इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू फॉलो अप द थिंग्स। ठीक है, सो यहाँ डीसी वैल्यू क्या होगी? 2.5 एसी क्या होगी? 1 millivolts. 1 millivolts. What will be DC here in this point? 2.5. AC? 0. 0. ठीक है, any other? Let's, ठीक है, I guess at this moment we can start with this point. I am writing 1 for the M1 and 2 for the this one, so I will just do like this. Make sure अगर sign में कोई confusion हो तो ask. So let's start with the M1. M1 में हम लोगों ने क्या चीज अब चाहिए? VGS1. VGS1 क्या होगा? Can we find the VGS1? सर सोर्स पोटेंशियल पहले चाहिए होगा. Source potential चाहिए होगा. So anyone can tell me what is the potential at the source point? इस source पे potential क्या है? What is VS? हमें अभी VS का नहीं पता, right? ऐसे ही है ना? But we still can find VGS1. Anyone can tell me how we can find VGS1 without knowing VS? हमें करंट पता है, यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आईडी, इसको ID1 कहते हैं, इसको ID2 कहते हैं। अगेन वी आर ऑन द डीसी अभी। ID1 कितना होगा यहाँ? 20 microamps. ID1 will be equal to 20 microamps, half of this 40 micro. Why? Because हम लोगों ने assume किया ना, assume it's given to us that the W over L of M1 and M2 is both 10 by 2 same है, and the DC value at VG is equal to same, and source is common potential. So I can write that without any doubt that VGS1 is equal to VGS2. I don't know the values, but ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि गेट पे सेम DC वैल्यू है, source are shorted together. So VGS1 is equal to VGS2 and W over L1 is equal to W over L2. अगर ये कंडीशन ना होती तो then I cannot say that current will be equally divided. Because of these two conditions, I am saying current will be equally divided. तो ये एक differential pair है. So अब ये DC value इस तरह आ गई, तो I know the current here, so I can write some equation. Let's say मेरे पास current की equation क्या थी? Half, अगर saturation में है
ठीक है। ID1 हमें पता है 20 माइक्रो है, म्यू सी एक्स गिवन है लेट्स से 120 माइक्रो एम्प्स पर वोल्ट स्क्वायर, ये हमेशा गिवन हो, यानी ऑल द टाइम इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। W/L गिवन है, यहाँ 10/2 है। VGS V threshold हमें पता है, यहाँ लेट्स से 6.8 volts, but again all the time it will be given to you. We are ignoring the body effect, वो हम इग्नोर करेंगे कैलकुलेशन में, but we need to know this thing. VGS1, so we can find the VGS1 from this expression. हमने इसमें assumption क्या की थी, या कोई assumption की है या नहीं की? Okay, saturation region के अंदर है। हाँ, so we somehow at this moment assume कि वो saturation में है. Is it assumption or is it calculation? और ये valid assumption है हमारी? फिर इसको बाद में चेक करेंगे हम लोग कंडीशन के लिए, अगर Yes. DDS हम लोग इसको डेफिनेटली बाद में चेक करेंगे, बट लुक्स लाइक एक गुड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। 20 माइक्रो एम्प्स इज फ्लोइंग थ्रू इट एंड देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, वो ऑफ नहीं है, 2.5 वोल्ट सप्लाई हो रहे हैं, सो हाईली लाइकली इट्स गोइंग टू बी इन सैचुरेशन, बट अगेन एट द एंड वी नीड टू मेक श्योर कि वो सैचुरेशन में है बाय फॉलोइंग आवर कैलकुलेशन, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। हम पहले अब यहाँ से आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड वी विल फाइंड आउट VGS1, ठीक है, फिर उसके बाद हम VS फाइंड कर लेते हैं। So I'm going to the next page, ठीक है। So अगर इसका एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखना चाहें ना VGS का, VGS1 will be equal to 2 times ID1. See if I do any mistakes, please note update. ठीक है, जस्ट हमने उसकी कोई मैनिपुलेट किया, तो VGS1 is equal to 2 times ID1 divided by mu and Cx plus V threshold. So 2 into 20 micro divided by mu and Cx is 120, assume कर लें, but again whenever it will be provided to you, W/L 10/2 plus V threshold 0.8. If you do the calculation, so this value comes out to be, again please make sure to verify on your side. Today I'm keeping calculator with me so I can do at run time, but आप लोग अपनी तरफ से वेरिएशन कर लें, ठीक है। So I'm again redrawing the circuit here, a smaller side, so we can, ऐसे lower part draw कर रहा हूँ so that we can get an idea. तो ये पोटेंशियल है VGS1, this one is VS and this one is VGS2. VGS2 कितना होगा? Same as VGS1. सेम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो VGS2 के बराबर होगा। So what about VS1 या VS1 नहीं कहते, so we call it a VS basically. हाँ, VS क्या होगा? 0 volts, 0 volts, मैं DC की बात कर रहा हूँ। Sir, it will be VG minus VGS1, which is ठीक है, 2.5. so अगर हम लिखें, बिल्कुल ठीक है, so just again I'm rewriting here for the one who didn't get it, VG1 minus VS, ठीक है, तो हम VS को लिख सकते हैं, it will be VG minus VGS, ठीक है, so it's 2.5 minus 1.058, so this potential will be equal to 1.44 watts, ठीक है। सो ये जो पोटेंशियल है, ये नाउ वी फाउंड आउट कि VS will be equal to 1.44 watts. So you can see the V threshold in reality will not be 0.8, it will be more than that, because कि हमारे पास जो VS है, VSB is now
1.44 volts, significantly good value, ठीक है। So यहाँ तक ठीक है। Can we say anything about at this moment about the saturation? या अभी भी नहीं कह सकते? कि M1 saturation correct था या नहीं था? Or still it's too much early to say? तो VD भी निकालना होगा, VDS चाहिए। VD निकालना होगा, so we need to find this potential VD, ठीक है। VD निकाल सकते हैं हम वैसे, S तो हमें पता है, तो VD निकालना है, ठीक है। हम VD निकाल सकते हैं। इसके ऊपर अगर इफ यू रिमेम्बर या सभी रिकॉल करें, हम लोगों ने इस किस्म का कुछ तो डायोड कनेक्टेड था, ठीक है। ठीक है, तो अगर ये अब आपके पास डायोड कनेक्टेड था, कैन वी फाइंड द VD फ्रॉम हियर समहाउ? यस सर। VD क्या होगा? सर हम लोग वो VG के बराबर होगा ऊपर वाले के। ठीक है, so we can write this thing is correct which I am writing, VD is equal to या VG is equal to, क्योंकि VG का भी हमें नहीं पता ना, that's the same thing ना, so is equal to it's a PMOS, तो ये ठीक है। ऐसे ही होगा, VD is equal to VDD minus VSG, या इसको अगर VSG3 कहते हैं तो, क्योंकि M3 था। All of you are comfortable with this expression जो मैंने लिखा है कि VD is equal to VDD minus VSG3, ठीक है। So let's try to find VDD, हमें पता है, VSG3 निकालना है। Let's try to find VSG3। उसके लिए M3 के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? M3 किस में है? सैचुरेशन में है, लीनियर है, ट्रायोड है? सैचुरेशन। So M3 के बारे में we can definitely say that it's in saturation. All of you are comfortable with this thing? Yes, sir. That M3 is in saturation. Why M3 is in saturation? It's diode connected. It's a diode connected. क्यों डायोड कनेक्टेड क्यों सैचुरेशन में होता है हमेशा? सर अगर इसकी हम वो कंडीशन चेक करें, ठीक है, इज इट इन सैचुरेशन रीजन और लीनियर रीजन, और वहां से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि गेट और ड्रेन क्योंकि एक ही पोटेंशियल पे है, सो दैट्स व्हाई द VTH और VTP if it's PMOS or NMOS, that will always be equal or less than 0. ठीक है। So because of this condition will all the time being satisfied since drain and gate are shorted, ठीक है। क्योंकि VS हम ये लिखना चाह रहे हैं, in reality VS is greater than VS minus V threshold which will be all the time valid, ठीक है। और वहां कोई पोटेंशियल होगा जो, तो इस वजह से वो पहली कंडीशन भी ट्रू है, तो that's why diode connected all the time in saturation, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। Let me see if I need to recall something, ठीक है। तो बल्कि यही मैं स्क्वीज करके लिख लेता हूँ and then we can bring the value, otherwise it will be difficult for me to. So ID हमें पता है, दोबारा ID1 सैचुरेशन में है, तो we can safely write half mu P हो जाएगा COX W by L VSG minus V threshold P whole square. So जो V mu P COX है given to us is 40 micron. Again, I'm just putting values from the book. Anytime, whenever they will provide it to you, V threshold P is equal to 0.9 volts. ठीक है? Again, mod value आ जाएगी. So we can plug it the numbers. W और L is यहाँ हमारे पास PMOS के केस में that was 30 by 2. Let's put it the numbers and try to find out. हमारे पास VSG3 क्या होगा? Same मैं equation दोबारा बल्कि लिख देता हूँ. ये same यही equation है VSG वाली. Just we need to plug it here. So similarly VSG3. फिर कैलकुलेट करें तो मुझे बता दें. I'm also doing from my side. म्यू पी को आपने म्यू पी CX को 40 माइक्रोएम्प लेना और W by L is 15. So VSG3, just make sure is it the correct value which I got? VSG3 I got 1.158. यही वैल्यू है सबके पास?
सर आपने म्यूपी CUX क्या लिया है? 40 माइक्रो एम्प्स पर वोल्ट स्क्वायर, एग्जैक्ट, बट 40 माइक्रो वैल्यू है इसकी। और V थ्रेशोल्ड P is 0.9 वोल्ट। ठीक है, Yes sir, it's 1.158. ठीक है। Yes, So sir, we can correct. find the VD क्या हो जाएगा आपके पास, then VDD minus this value 5 minus 1.158, this comes out to be 3.842. If VD is at 3.842, this means the M1 is also in saturation. ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वो पोटेंशियल था VS was 1.44, so 3.842 minus 1.44, this is 2.402. So this means VDS is greater than, या मैं लिख भी देता हूँ, VDS1 is greater than VGS minus V threshold. ठीक है, so that's why M1 जो हमारी assumption थी that was correct. इवन हम पहले चाहते तो हम पहले भी M3 की वैल्यू फाइंड कर सकते थे VDD की, we don't even have to assume it, but again this way also it's fine because most of the time we also have to go with our intuition कि होगा क्या। So हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, we figure it out M3 किस रीजन में है, we figure it out M3 की वोल्टेजेस क्या हैं, we figure it out about M1 वो किस रीजन में है, M1 की वोल्टेजेस क्या है, what about M2, M2 किस में होगा, अगर M1 saturation में था this means M2 is also in saturation, ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम VGS है, that's well and good. Let's move forward and talk about the upper right side जो हमारे पास M4 था। मैं M4 को टॉप ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फिर ड्रेन पोटेंशियल था तो ये ड्रेन कह देते हैं, ठीक है, इसका 15 सॉरी 30 बार पूछा। So what about M4, M4 किस में होगा आप लोगों के ख्याल से, कट ऑफ में, सैचुरेशन में, लीनियर में, और we cannot say at this moment, we need to calculate, आप लोगों क्या ख्याल है। ठीक है, मैंने हाफ सर्किट ड्रॉ कर दिया। जी बताइएगा M4 के बारे में, तो दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। सर इसका ST तो पूरा 5 वोल्ट्स आ जाएगा। इसके जो M4 के VSG जो होगा that will be equal to 5 volts, ठीक है, ये सबको क्लियर है ना कि यहाँ एक्सप्लिसिटली DC ग्राउंड है, ठीक है, so it's ground, so we can write VSG is equal to 5 volts and so VSG is greater than V threshold P, तो ये कट ऑफ में तो नहीं हो सकता, ठीक है। so सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास कि VSD should be greater than VSG minus V threshold P, यही था। so अब हमें again we need to know the potential of VD, so ये अब देखते हैं क्या होगा, or we can roughly write let me just further tap it down, तो हमें एक थोड़ी assumption के लिए I will tap it down, so VSD का लिख सकता हूँ VDD minus VD should be greater than VDD, VSG को हम VDD लिख सकते हैं minus V threshold, ठीक है, तो VDD will be cancelled out by VDD, so VD
अगर मैं करूंगा should be less than V threshold. ये क्लियर है जो मैंने किया है? Make sure this thing. This potential should be less than 0.9 volts क्योंकि V threshold P ये था. Is it clear this steps? चेक करें एक बार इसको, अगर ना क्लियर हो तो प्लीज आस्क, otherwise do I will wait 2 minutes. Meanwhile all of you ensure that this is clear. जी बताइएगा, ये ठीक है? VDD should be less than V threshold P, meaning VDD should be less than 0.9 volts to ensure that M4 in saturation. अगर नहीं होगा तो M4 saturation में नहीं होगा. तो अब बताएं M4 saturation में है या नहीं है? कंडीशन हम लोगों ने निकाल ली है VD के लिए. Anyone can comment the value of VD? वो 0.9 से बड़ा होगा, 0.9 से छोटा होगा? पॉसिबल नहीं है कि वो 0.9 हो, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ पे 20 माइक्रो एम्प्स, और 0.9 से नीचे वाला पोटेंशियल 1.4. बिल्कुल ठीक है. So what Abdurrahman is saying that we need VDD should be less than 0.9 volt. But if we see the VS is already 1.414, even यहाँ कोई potential ना भी हो तो it's not possible because the current is flowing this direction. So it's not at all possible that this M4 can be in saturation. So M4 is in linear region. ठीक है. Now हमें पता चल गया है M4 is in linear region. We know the current. We can find this expression. Linear region के लिए हम क्या equation use करते हैं? ID is equal to mu n COX W over L VGS minus V threshold times VDS minus VDS square by 2. And क्योंकि linear region में VDS की वैल्यू छोटी होती है तो we normally ignore this one. इसको इग्नोर कर सकते हैं. तो अपनी लाइफ इजी करने के लिए we can do mu n COX W over L VGS minus V threshold times VDS. ये मैंने NMOS के लिए लिखी है, तो PMOS के लिए हम चेंज कर लेते हैं. This will become mu PX, this will become CG, this will become same thing and ST. ठीक है. ID again हमें पता है, mu PCX is given, WL is given, VSG हमें पता है, we can find the VSD. तो VSD हम यहाँ आराम से find कर सकते हैं. Can anybody find VSD for me? Please quickly find VSD and tell me the value. इस VSD इसको VSD इसको 4 कह देते हैं. VSD 4 क्या होगा? Plug in mu PCX की वैल्यू अगेन 40 microamps है per volt square, 40 microamps per volt square, and V threshold P is equal to 0.9 volts. Please find VSD 4 quickly for me. So we will, as we start in person, we will start having our quizzes too. तो पहला quiz आपका already due है, so might be we will do on जो coming Tuesday है या on Friday, coming Wednesday on Friday. And keep in mind हमारे जो quizzes होंगे वो pop up होंगे most of the times. So I will not announce it, but you can infer when there is material which is being covered or you are not responsive, then definitely that day we might have a quiz next day or that day. Sir, 8.13 millivolts. 8.13 millivolts. ठीक है.
Anyone else got the same number? अगर हम यहाँ से अब VD निकालना चाहें तो it's 5 minus 8.13 millivolts. So this means कि हमारे पास ये VD point क्या था? It was 4.9 something. ठीक है, इट्स अ वेरी मच बिगर नंबर, सो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि वो हमारे पास सैचुरेशन हो सकता. अगेन इट गॉट वेरीफाइड. ठीक है, सो अब हम लोगों ने ये भी निकाल लिया सारे डीसी पॉइंट्स ऑलमोस्ट. वी फिगर इट आउट, दिस इज इन लीनियर. वी फिगर इट आउट M1 and M2 in saturation and M3 is in saturation. Now what we need to do, we need to model the transistor for our AC analysis. हम अभी भी इसकी amplification find नहीं करेंगे. We are only going to place the model. ठीक है, amplification वाले काम होंगे we are going to do in the next lecture. So अगर मैं अब इसका कहूँ, let's draw not hybrid pi model. इसको AC के लिए सिर्फ आपने करना है, AC मॉडल बनाना है कि मेरे पास GM कितना है, RO कितना है, how I can tweak the circuit accordingly. तो जो M1 था इसको मैं एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूँ. M1 क्या चीज थी मेरे पास? DC पॉइंट. एज्यूम कि नाउ ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन या जो भी जिस रीजन में भी ऑपरेट करना चाहते थे. So I'm not putting the DC value just for showing. In reality, they are still there. So this is 1 millivolt M1. यहाँ M2 है. This is grounded. Again, in reality, यहाँ नहीं ground. यहाँ ऊपर क्या ड्रॉ करूँ? M3 को किससे रिप्लेस करूँ मैं? ये M1. क्योंकि अब मैंने उसका DC एनालिसिस, DC मॉडल बना मिल गया था. तो इन AC में इसको M3 को किससे रिप्लेस करूं? मेरे पास ये था. जी बताइएगा. सर रजिस्टर से M3 को दोबारा डायोड M3 को से किससे रिप्लेस? डायोड कनेक्टेड है तो किससे रिप्लेस करूं? डायोड से दोबारा. एनीवन एल्स जिन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से कोर्स एक्सप्लिसिटली रिसेंटली लिया है, डायोड कनेक्टेड हो तो उसको किससे रिप्लेस किया जाता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? दोबारा आप इसको थोड़ा रिवाइज करें कि इफ वी हैव अ डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर, उसको हम कहते हैं सैचुरेशन में, किससे रिप्लेस करते हैं? डेफिनेटली वी रिप्लेस विद सम रेजिस्टर. लेकिन उस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी हो, क्या होती है? इट्स इक्वल टू 1 over ट्रांस कंडक्टेंस. सो हियर इज वन थिंग, ऑल ऑफ यू who are not sure, अगर शायद थे अभी बात करने में, it's fine, but if you are not sure कि this is equivalent to this thing, go and revise the microelectronic basic stuff. You need to do this thing. ठीक है, otherwise it's really difficult. हम लोगों ने इसमें नहीं कहना. Yes, it will be in parallel with R naught, but we will ignore that for our analysis. ठीक है, we don't have to make our life complex. ठीक है, so we will make only 1 over GM. एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है, मॉडल का मतलब ये होता है we want to simplify, we want to get an idea. If we start making our life complex by bringing more and more things, we will not be able to solve the question. ठीक है, वो काम सिमुलेशन टूल के हैं, but we have to simplify. So हम अपने कोर्स में मैक्सिमम we will replace this one with 1 over GM. ठीक है, हम थोड़ा सा अपने आप को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि 1 over GM की वैल्यू जो in journal होती है, that will be in the range of might be 100 और 1 kilo ohm. R naught की वैल्यू in the range of mega ohms में आ जाती है. So इन दोनों को अगर पैरेलल लेंगे भी सही तो 1 over GM will dominate. So we don't have to make our life misery कि हम 1.01 kilo ohm को कोट करें. ठीक है, so keep this thing in mind. So आप इसको एक बार देखें. Let me just
Right. So Rimsha and Roshan, आप लोगों का मेरा ख्याल है रिलेटेड टू सम योर स्टफ, आप लोग कैंपस में हैं या अभी नहीं है? Sir, both of us are day scholars, so we don't have Right. campus access. ठीक है. So I guess some of the components might be जो आप लोग के आए थे. So that's something then I will collect them. Right. So यहाँ तक क्लियर है ये 1/GM वाली चीज. ठीक है. So this was basically, इसको हम लिख सकते हैं 1/GM3. या भी कैलकुलेट भी कर लेते हैं. एंड व्हाट अबाउट यहाँ, इसके ऊपर क्या होगा? यहाँ क्या लगाऊं मैं? 5 वोल्ट्स करूं? ग्राउंड ग्राउंड, क्योंकि एसी मॉडल बना रहे तो एसी ग्राउंड हो गया. इधर क्या रिप्लेस करूं? M4 को किससे रिप्लेस करूं? वो तो सिंपल रेजिस्टर आएगा आई थिंक, क्योंकि वो था ही लीनियर रीजन. बिल्कुल. सो इट वाज इन द लीनियर रीजन. सो उसको हमें ट्रायोड में था तो हमें रेजिस्टर से रिप्लेस करें. वो रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी? एनीवन कैन टेल मी? उसको मैं RCH लिख दिया है. उसकी वैल्यू कोई बता सकता है? वो रेजिस्टर था क्या इन रियलिटी? अगर हम उसको देखें रेजिस्टर को, वो ही रेजिस्टर था VDS ID. ये लीनियर रीजन है फॉर एग्जांपल. सो हो क्या रहा था? अगेन स्लोप, इनवर्स ऑफ स्लोप. ठीक है. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, आई कैन राइट इट. लेट मी जस्ट राइट इन दिस वे. सो जो इसकी स्लोप होगी दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 1/RCH. ID की अब इक्वेशन कहाँ है कि लीनियर रीजन की हमें पता है अभी जो हम लोगों ने देखी थी, μn COX W/L VGS minus VT VDS. Again VDS square by 2 pi, ignoring that thing, just again for the simplification, the same जो अभी मैंने बात की थी. इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू VDS, क्या आ जाएगी वैल्यू? 1/RCH इक्वल टू μn CX कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट VGS इज कांस्टेंट माइनस VT. ऐसे ही हो जाएगा. सो RCH इज इक्वल टू 1/μn COX W/L VGS माइनस VTH. P सारे याद हैं. सो इफ आई दिस इज ऑल फॉर द PMOS, तो ये हमेशा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर है ये? हम लोगों ने M3 को मॉडल कर लिया 1/GM3 के साथ, और M4 को मॉडल कर लिया रेजिस्टेंस के साथ. एंड M1 एंड M2 को हम बाद में खोल लेंगे इन द फॉर्म ऑफ और जो GM और GM1 और RO1 और GM2 और RO2. ये लेकिन हम लोग अभी सिर्फ हमें सिर्फ ये मॉडल के वेरिएबल्स बताने हैं, या अगर हमने किसी चीज को, वी डोंट हैव टू सॉल्व द सर्किट. वो गेन्स की बातें हम लोग 1 या 2 लेक्चर्स के बाद स्टार्ट हो जाएंगे जब वी विल स्टार्ट टचिंग चैप्टर 24. अभी वी जस्ट नीड टू मॉडल कि हम लोग एक DC मॉडल है, एक DC मॉडल क्या करता है, एंड देन AC मॉडल हमें वो सारी चीजें निकाल के दे देता है. ठीक है. सो वी सिंप्लीफाइड आवर सर्किट इन दिस फॉर्म. यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी रिक्वायर्ड? So let's find out the values now. हमें 1/GM3 फाइंड कर सकते हैं, या GM3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? So we know μn COX mu P sorry COX W/L VSG 3 minus V. किसी को याद है VSG3 की वैल्यू क्या थी? अगर लिखी हो, otherwise I need to go back on the papers. Because it was 1.158. Yeah, 1.158. ठीक है. So it was 1.158. So let me write this. So I'm putting the numbers 40 micro divided by 15 multiplied by 15 multiplied by 1.158 minus 1. Okay.
So this one will become 1.548 4. So ये 4 exponential and 1 divided, but you can just verify all the things yourself. So ये जो 1/GM3 की वैल्यू हो जाएगी, that will be equal to 6.4 किलो. ठीक है, so ये 6.4 किलो ओम हो जाएगा. ठीक है, what about this R channel? इसकी क्या वैल्यू होगी? We have this again the value, so let's plug it here. Again यहाँ हमने VSG4 आ जाएगा instead of this thing, और यहाँ mu PCX. VSG4 हम लोगों ने निकाला था. I guess we also figure it out ना, हम लोगों ने निकाला था, right? So वो हमें पता है, बल्कि rather this is 5 volts. 5 minus 0.9 into 15. तो ये आ जाती है रेजिस्टेंस की वैल्यू. अगेन मेक श्योर टू वेरीफाई इट. I just did calculation, comes out to be 406 ohm. ऐसे ही है. Again check it please. Sir, So in here we did this one, we find out the values. So now we can proceed towards the next things. मेरे ख्याल है शायद we might need to stop here. We are there on the time. But again, next thing we need to a little bit do the AC, not using hybrid pi model, but we need to just evaluate the values. So you can rather what I would suggest all of you, आप लोग ना जो example 9 point, this is example 9.5, so go through and complete example 9.5 yourself. जितने में खाली conceptual points थे we covered already. Now might be just the calculations are left, yeah, just to have. So go through example 9.5 yourself. So हम लोग क्या करेंगे, जो next अभी lecture Wednesday को होगा उसमें we will do the simulation of example 9.5. So उससे आप tools के साथ एक familiarize भी हो जाएंगे, and then in class we will do that one exercise. So I will ensure कि और फिर हम values को compare करेंगे, and then we can do that activity so that we can link basically the theory or analysis with actual simulations. तो हम लोग ये कर लेते हैं. ठीक है, is it clear? So any concern, question in general related to the today's topic or the course, please do ask. तो अगर homework से भी related कोई concern है तो you can ask. सर जो 1/GM आपने 1 किलो ओम वाला पॉइंट बताया था, वो काइंडली थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? Yeah. थैंक यू. Let's rather figure it out. Just a minute. Let me just. यहाँ in reality जिस जमशेद कह रहा था, अगर हम इसको हाइब्रिड पाई मॉडल से ओपन करें, आई वुड अगेन इफ यू फील डिफिकल्टी डू वन टाइम इन द होम योरसेल्फ. अगर कोई इशू हो तो दीज थिंग्स डेफिनेटली वी कैन डिस्कस, बट आई वुड प्रेफर टू डिस्कस लाइक जो अगर हाइब्रिड पाई मॉडल में कोई इशू है तो डिस्कस दैट इन द ऑफिस आवर्स. ठीक है, ऑफिस आवर्स में अनाउंसमेंट, क्योंकि आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस हो जाएगा तो आई विल अनाउंस टाइमिंग्स आल्सो. ठीक है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है. So if whenever, first of all, gate is shorted with drain, we normally call it as a diode connected, चाहे वो NMOS हो चाहे वो PMOS हो. ठीक है, the condition is that drain shorted with gate. उसको हम मॉडल करते हैं. In actual model will be, if we want to do the hybrid pi model से ड्रॉ करेंगे, that will be equal to 1/GM. अगर ये M जो भी 3 नाम दे दें, M3 in parallel with RO3. ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि normally RO3 is pretty much bigger than 1/GM3. जब भी कोई चीज काफी ज्यादा बड़ी हो और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो कौन सी डोमिनेट करती है? जो छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि इनमें 10 टाइम्स या 100 टाइम्स इजीली होता है. वी कैन ऑल्सो प्लग इट द वैल्यूज एंड सी कि हमारे केस में भी ये ट्रू है या नहीं है assumption. इसलिए कह रहा था कि वी कैन अप्रोक्सीमेट ऑल द टाइम इज इक्वल टू 1/GM3.
ठीक है, तो मॉडल सिंप्लीफाई हो जाएगा। नाउ 1 over GM3 की हम लोगों ने वैल्यू क्या कोट की थी? वी कोटेड अराउंड व्हाट वाज द वैल्यू, याद है आपको? अभी क्या निकाली थी वैल्यू? लेट मी जस्ट सी। So we quoted 1 over GM3 as difficult to go, huh? So we quoted, seems to be I need to go back to see. Hey. We find out 6.4 for kilo, ठीक है। So हम लोगों ने इसको कोट किया था 6.4 किलो। Now what about RO3? RO3 क्या होगा? Will be equal to 1 over lambda ID. लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या कहा था? इट्स इन द 0.01 नॉर्मली होती है इट्स प्रोसेस के लिए। एंड आईडी क्या होगा? आईडी विल बी इक्वल टू 20 माइक्रोन गिवन है। इसको कोट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.01 टाइम्स 20 माइक्रो 1 over 2 exponential minus 7 1 divided by, so it's going to be 5 mega ohm। तो आप 5 मेगा और 6.4 किलो को पैरेलल में लेंगे, so what will be the value ultimately? So this will becomes out to be 6.39 kilo ohm। So that's why we can do this approximation, ठीक है? Is this point clear? Yes, sir. Thank you. Right. So just again, if अगर किसी को कोई concern है regarding the hybrid pi model, regarding the basic things, make sure to revise in the next week. Office hours I will just share today, so you can come in the office hours in person and we can discuss those things before we start going to the main chapters. Then it will be really difficult for you to follow up. ठीक है?